Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, myself Professor Uday Bukre. Now I am welcoming you on your own YouTube channel Ekeeda. If you are watching my video for first time, I request you to subscribe to our channel and also press bell icon for your latest notifications. होपफुली आप मेरे वीडियोस हमेशा देखते हो. अभी भी एक बहुत अच्छा वीडियो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीए इंटर कोर्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट टॉपिक सिंगल एंट्री क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड. अभी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है. लेट्स गो टू द क्वेश्चन. इनकम टैक्स ऑफिसर on assessing income of Shri Moti for the financial year 2015-16 and 2016-17 feels that उसको ऐसा फील आ रहा है. क्या फील आ रहा है उसको? that Shri Moti has not disclosed his full income. मोदी अपना पूरा इनकम नहीं दिखा रहा है. ऐसा डाउट किसको आ रहा है? इनकम टैक्स के ऑफिसर को आ रहा है. He gives you the following particulars of assets and liabilities of Shri Moti as on 1st April 2015 and 1st April 2017. फर्स्ट टाइम आपको दो डिफरेंट डेट में 2 साल का डेटा दिया है. तो कॉमन सेंस है, मुझे प्रॉफिट भी 2 साल का ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को. दूसरी बात, when they are saying these are the assets and these are the liabilities, we are safely assuming these are the assets and these are the liabilities of the business without having any doubt in the mind. तो ये सभी के सभी assets है. कैश, इन्वेंट्री, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, वाइफ ज्वेलरी. लाइबिलिटीज इंक्लूड ओविंग्स टू मोतीज ब्रदर्स, क्रेडिटर्स. अगेन आपको वही डेटा दिया हुआ है आगे. तो इन शॉर्ट आप पहले डेटा में से आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे, दूसरे डेटा में से आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे. सेकंड बराबर है. दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 साल का डिफरेंस है. ड्यूरिंग द 2 years डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स वेयर 4000 पर मंथ. कांट आई से इट इज अ ड्रॉइंग. अच्छा, अगर ये 4000 पर मंथ है, ठीक है ना, आई वांट टू कैलकुलेट फॉर 2 years. तो 2 years के लिए मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? आई विल वर्क फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 24 मंथ्स. ठीक है. और आई कैन से 12 months into 2 years, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. द डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वेयर 1,05,000 फॉर द ईयर 2015-16 एंड 1,23,000 फॉर द ईयर 2016 एंड 17. तो 2 साल का प्रॉफिट उन्होंने डिवाइड करके दिया. क्या क्या डिक्लेयर हुआ है? स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट. क्या इनकम टैक्स ऑफिसर सही बोल रहा है? उसका डाउट सही है. एक्सप्लेन बाय वे ऑफ गिविंग यू आर वर्किंग. मतलब बेसिकली आपको वर्कआउट करने का है प्रॉफिट, फिर आपको चेक करना है क्या ये प्रॉफिट इसके साथ मैच होता है. मैच नहीं होता है तो आपको लिखना है कि मैच नहीं होता है. दैट्स इट. सो लेट अस गो अहेड विद प्रिपरेशन ऑफ दिस ऑल थिंग्स. सिंपल, अगर आप ठीक से देखोगे इसके अंदर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है. तो इवन इफ आई प्रिपेयर अ कॉलमनर प्रेजेंटेशन विल डू, बट स्टिल आई विल फॉलो माय सेपरेट प्रेजेंटेशन मेथड. Along with this, we will also complete second statement of affairs. So I am noting down everything from here. आपको दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंसेस, फिर क्लोजिंग बैलेंस. तो स्टेप बाय स्टेप बना देते हैं. आई एम सिंपली कॉपिंग दिस डेटा इन द रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. तो प्लीज अलाउ मी, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बाद में कितना बैलेंस आता है.
Students, I have noted the given examples data in these two statement of affairs. अभी मैं इसको क्लोज करके ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूं. So student, I have prepared two statement of affairs and I got capital of Moti on 1st April as well as on 1st April 17. तो दो डिफरेंट डेट का मुझे कैपिटल मिल चुका है. अभी मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा फॉर 2 years एंडिंग ऑन 31st March 17 बोलो या फिर 1st April 17 बोलो. ठीक है. दोनों तारीख लिख दिया है मैंने. 31st March 17 बोलो या फिर 1st April 17 बोलो. In this statement, students, we are now writing capital on 1st April 17 first. Which is 565,000. उसमें से मैं माइनस कर रहा हूं कैपिटल ऑन 1415, दैट इज द ओपनिंग कैपिटल. योर ओपनिंग कैपिटल इज 3,13,000. It is net change in the capital during 2 years unless otherwise there is other adjustment. It is a profit for the 2 years. But let us see what they have given you. They have given you that के उसने ड्राइंग किया है, उसका डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है 4,000 पर मंथ. दैट इज द ओनली एडजस्टमेंट वी हैव टू एडजस्ट. So we will add drawing for 2 years. This I will add. $3,48,000 is the profit what we have calculated. How much profit he has disclosed? आपके क्वेश्चन में चेक करो, 2 साल का प्रॉफिट उसने डिस्क्लोज किया 105 एंड 123. तो आई एम राइटिंग हियर फॉर आवर नॉलेज डिस्क्लोज प्रॉफिट फिफ्टीन 16 में उसने डिस्क्लोज किया था 1,05,000 प्रॉफिट. देन ही हैज डिस्क्लोज द प्रॉफिट ऑफ 123,000. As per our calculation, profit should have been 348, but as per his disclosure, profit is 228,000. तो क्या लगता है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट और नॉट? सिंपल है, करेक्ट है यार. देखो ना, जबकि अपने कैलकुलेशन के हिसाब से उसका प्रॉफिट इतना बनना चाहिए था, उसने दिखाया सिर्फ 228,000. देयरफॉर आई कैन मेंशन प्रॉफिट अंडरस्टेटेड is equal to 348,000 minus 228,000. उन्होंने जो क्वेश्चन किया था उसका हम लोग आंसर लिख रहे हैं. उन्होंने पूछा है कि स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट. आई विल से यस. तो आई एम राइटिंग माय कमेंट हियर.
So I have written my comment. Actual profit is understated by Mr. Moti by rupees 1,20,000. Hence contention of income tax officer is correct. ऐसा क्वेश्चन 7 से 8 मार्क के लिए आ सकता है. ये आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जहां पे 2 साल का प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला है. तो दैट डजंट मैटर. अपने को 2 पीरियड अगर कंपेयर करोगे तो वो पीरियड का प्रॉफिट्स मिलेगा ही मिलेगा. आई होप ये इजी क्वेश्चन आपको डेफिनेटली समझा होगा. फिर भी कोई डाउट रहेगा, वंस अगेन आई विल सजेस्ट एक बार वापस वीडियो देखो आपको और अच्छे से समझेगा. देन टू स्टिल इफ देयर आर एनी डाउट्स प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल लाइक टू सॉल्व योर क्वेरी एट अर्लीस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Keep watching, keep sharing. God bless you all. Love you all. Bye.